Assalamu alaikum viewers. This video is about the history of English literature. In this video, I will give you all the information about the period and ages of English literature. As literature is the reflection of society, the various changes which have come about in English society from the earliest to the modern time have left their stamp on English literature. Thus, in order to appreciate properly the various phases of English literature, knowledge of English social and political history is essential. For example, we cannot form a just estimate of Chaucer without taking into account the characteristics of the period in which he was living, or of Shakespeare without taking proper notice of the great events which were taking place during the reign of Elizabeth. Same is the case with other great figures and important movements in English literature. When we study the history of English literature from the earliest to modern times, we find that it has passed through certain definite phases, each having marked characteristics. These phases may be termed as ages or periods, which are named after the central literary figures or the important rulers of England. Thus, we have the ages of Chaucer, Shakespeare, Milton, Dryden, Pope, Johnson, Wordsworth, Tennyson, Hardy, and on the other hand, the Elizabethan age, the Jacobean period, the age of Queen Anne, the Victorian age, the Georgian period. Some of these phases are named after certain literary movements, as the Classical age, the Romantic age, while others after certain important historical eras, as the Medieval period, Anglo-Saxon period, Anglo-Norman period. These literary phases are also named by some literary historians after the centuries, as the 17th century literature, 18th century literature, 19th century literature, and 20th century literature. These ages and periods naturally overlap each other and they are not to be followed strictly, but it is essential to keep them in mind in order to follow the growth of English literature and its salient and distinctive characteristics during the various periods of its development. Now, let us have a critical survey of the background and development of English literature from the earliest times up to the present age. Now, we have literary history timeline. Historical or non-English American item. BC to AD 428 Celtic and Roman Britain. हमारे पास है 428 to 1100 में ओल्ड इंग्लिश मीन्स एंग्लो सैक्सन पीरियड. इसमें था 700 में था ब्योवल्फ कंपोज्ड इन प्रेजेंट फॉर्म. 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, नॉर्मन कंक्वेस्ट. 1215 में साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा. 1307 to 1321 में डांटेज डिविनिया कॉमेडिया. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट. 1350 to 1500 मिडल इंग्लिश पीरियड. इसमें था 1872 चौसर प्रोलॉन्ग टू द कैंटरबरी टेल्स. 1492 to कोलंबस लैंड्स इन अमेरिका. 1500 to 1660 में the Renaissance in England. 1607 to 1780 is considered the colonial period in America, which includes 1517 Martin Luther posed his thesis in Wittenberg, leading to Protestant Reformation. 1532 to Machiavelli, the Prince. 1539 to English Bible, the Great Bible published. नेक्स्ट है 1558 to 1603 reign of Queen Elizabeth I. 1564 to 1616 लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर. 1601 में शेक्सपियर्स हैमलेट. 1607 में सेटलमेंट एट जेम्स टाउन वर्जीनिया. 1620 में पिलग्रिम्स लैंड एंड प्लेमथ. 1649 में एक्सिक्यूशन ऑफ चार्ल्स I. 1649 में टू 1660 में कॉमनवेल्थ पीरियड, इंग्लैंड रूल्ड बाय पार्लियामेंट. नेक्स्ट है
1660 to 1798. It includes New Classical period, also known as the Long 18th century. 1660 में चार्ल्स टू रिस्टोर टू द थ्रोन द रेस्टोरेशन. 1667 में था जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट. 1726 में जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल्स. 1740 में था सैमुअल रिचर्डसन. 1740 to 5 तक था द ग्रेट अवेकनिंग रिलीजियस रिवाइवल. 1749 में हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स. 1751 में ग्रे एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. 1755 बेन जॉनसन डिक्शनरी. 1760 to 67 लॉरेंस टर्न. 1765 to 1830 revolutionary and early national period. 1770 Oliver Goldsmith The Deserted Village. 1771 Ben Franklin autobiography. 1775 to 1783 Revolutionary War. 1776 Declaration of Independence. 1783 to 85 Noah Webster Grammatical Institute of the English Language. 1789 French Revolution began. अब नेक्स्ट पीरियड है रोमांटिक पीरियड. इसमें देखते हैं क्या क्या इंक्लूड था. 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज का लिरिकल बैलेड्स. 1811 में जेन ऑस्टन का सेंस एंड सेंसिबिलिटी. 1817 में मैरी शेली फ्रैंकनस्टाइन. 1819 में लॉर्ड बायरन डॉन जॉन 1 and 2. 1820 सर वॉल्टर स्कॉट आइवनहो. 1830 एडगर एलन पो पोएम्स. नेक्स्ट पीरियड है अर्ली विक्टोरियन एज मीन्स इंग्लिश लिटरेचर. 1836 में रॉल्फ वाल्डो इमर्सन नेचर. 1836 चार्ल्स डिकन्स पिकविक पेपर्स. 1837 Nathaniel Hawthorne Twice Told Tales. 1842 Robert Browning Dramatical Lyrics Lord Tennyson Poems. 1845 Edgar Allan Poe The Raven. 1849 Charles Dickens David Copperfield. 1850 Elizabeth Barrett Browning Sonnets from the Portuguese. 1850 में था Nathaniel Hawthorne का Scarlet Letter. 1855 Walt Whitman Leaves of Grass. 1859 Charles Darwin Origin of the Species. 1860 George Eliot Mill on the Floss. 1860 to 5 American Civil War. नेक्स्ट पीरियड है रियलिस्टिक पीरियड मीन्स अमेरिकन लिटरेचर. इसमें था कार्ल 1867 में कार्ल मार्क्स. 1872 में जॉर्ज एलियट मिडल मार्च. 1874 थॉमस हार्डी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. 1879 Henry James, Daisy Miller, Henry Gibson, A Doll's House. 1883 Robert Louis Stevenson, Scattered Troyer Island. 1891 Thomas Hardy, Tess of the D'Urbervilles. 1893 George Bernard Shaw, Mrs. Warren's Profession. 1895 Oscar Wilde, The Importance of Being. Ernest Stephen Crane, The Red Badge of Courage. नेक्स्ट है 1914 to 1918. As we all know, it's the period of First World War. 1917 में T.S. Eliot The Love Song of J. Alfred Prufrock. 1922 James Joyce Ulysses. T.S. Eliot The Wasteland. 1924 E.M. Foster A Passage to India. 1925 Virginia Woolf Mrs. Dalloway. 1926 T.E. Lawrence The Seven Pillars of Wisdom. Ernest Hemingway The Sun Also Rises. 1929 William Faulkner The Sound and the Fury. 1933 W.B. Yeats Collected Poems. नेक्स्ट पीरियड है 1939 to 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 1940 में था रिचर्ड राइट नेटिव सन. 1946 जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म. 1949 आर्थर मिरल का था डेथ ऑफ अ सेल्समैन. 1952 सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो.
नेक्स्ट पीरियड है 1965 टू ऑनवर्ड, पोस्ट मॉडर्निस्ट पीरियड्स। 1966 में सिल्विया प्लाथ, एरियल। 1969 माया एंजेलो, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। 1983 में एलाइस वॉकर का था द कलर पर्पल। So it was all about the period and ages of the English literature.